टिकट है ना? हाँ, कैसे बता रहे कहाँ है आप करम भाई? मैं एक पैर हूँ थोड़ा give me a moment. I'm using it. Oh, come on. तुम बस अंदर चले आओ। Okay, next time you go on, please. क्यों मिलने वो तो कह रहे थे साथ कभी तक नहीं आया No, you have it or you don't have to take it. Our name. आइए सर Fine, man. Traveling buddy. Traveling sir. How are you sir? Travel sir. Travel. Excuse me, ma'am. Please make yourself at home. Find your company. Enjoy the work. Haq lost his father in the recent Airbus tragedy in Nepal. We would like to observe a minute's silence in respect of the departed soul. Pranam.
the front door, listen to my heart go bang, bang. I need you, baby, and there's no doubt. How do you know I told that? Hey, Mona. Mona. Hey, Mona. It's long hair. Qasim Masood. Qasim Masood. A guy on multiple boxes. We call it now Qasim Masood. And another young man of our group is performing on keyboard. Wajahat Rahoon. We got But that disagreements are a part of life, wherever life forms exist. Aliens is a brief comedy by Majid Fareed, Asim Maqsood, Adnan Bukhari, Ghulam Ali Talpur, Latif Abbasi, and Nofal Musa. Different languages of their own planets. But don't worry, we have also arranged two interpreters here who are going to assist us and help us understand what is actually happening here. But let me introduce the two aliens to you first. But unfortunately, they are not here. Where are they? Oh, there they are. The one alien, and here is the other. Please give them the big hand. Please ask them to sit down. Please. Now let me first introduce to you the two aliens. On my left, we have Mr. Hugg Dog Buck, and he has come from planet X. And on my right, here is the ever shrewd Mr. Systematic Joe, who has come from planet Double X. Anyway, to assist us, we have also arranged two interpreters who are going to help us understand what is happening. So their introduction is must also. Here we have got my friend Mr. Dick Johnson, who is going to translate the language of planet Double X. And on my left, here is my good old friend Mr. Seaman Hitchcock, who is going to translate the language of planet X. Before we proceed, let me mention a very interesting fact. You know, we spent $4.5 billion on Mr. Dick Johnson to enable him to learn the language of planet Double X. And it took him 9 months, 17 days, and 6 hours to learn that language. And although we only spent $0.2 million on my good old friend Mr. Seaman Hitchcock, but it took him his entire life to learn the language, his entire life of 84 years only. So you see, he's a very devoted person. Anyway, stay tuned and listen to what they are saying. I'm sure you're going to enjoy. So let's start our proceedings. My first question will be to Mr. Seaman Hitchcock. Mr. Seaman Hitchcock? Mr. Seaman Hitchcock, are you alive? You are alive? Okay. My first question to you is that please ask Mr. Hugg Dogbuck that how did he came to Earth and did he like it? Mr. Hitchcock, please wake up. Yeah. Give the mic. and then slip down 700 feet below. 700 feet? Yeah, Oh, 700 feet. From there, some human beings brought him down. Regarding Earth, he says it's a nice place. Plenty of beaches, plenty of cool-looking chicks, and excellent cocaine. Oh. Mr. Dick Johnson, would you like to tell this to Mr. Systematic Joe? Astariamo 40 la villa. Intaku! What is he saying? He's not saying anything, he's laughing. Oh, he's laughing. Thank you. Okay, Mr. Dick Johnson. Now please ask Mr. Systematic Joe that how he came to Earth and did he like it? Rectangoliano Landu. Jam Saramana, Vastimoke, Easte, Monta Pantatica Gay, Wastimeku, Easte Way, Mantiwo, Easte Waku, Easte Way Macanta.
What is he saying? Well, his spaceship was hovering over the Bermuda Triangle and he felt a very strong force pulling him. Oh. Although he was capable of escaping, he ran out of fuel. But he pushed the ejaculation button and got out. Fortunately, he landed on his head, so no damage was done. Oh, very strange landing. And what about Earth? Did he like it? La Zariariamo. Supinto Carata, Massimo Suburo Sagara, Wasime Kunta, Inteme Kunta Kinte, Vasime La Luqueta, Wiseme Kunta Mente, Vastimo Kunta. Good. Good. Anyway. Okay, Mr. Seaman Hitchcock. Now, will you please ask Mr. Hugger Dogbuck that what's this dispute all about and who started it? Yes? He's saying, this systematic Chung, he has stole all the female population of planet X. This action of systematic Chung is restricting population growth in our planet. And no babies are born. This is all the dispute is about. Oh, so this is the dispute. Please take Mr. Starr. Please ask him. He seems to be very furious. Pita Sage La Haramzama. Karanta Mama, Intavama Fandu. Karasta Mama, Iseve Kontava. Askime Uwe, Isevo, Anteva, Zamzamana, Hamama Samana, Estema Kunta. What the hell, man? It was this little idiot who started the fight. Some dumb alien thief stole the clouds of his planet, so he stole the clouds of his planet. And this is how the fight got started. Oh. Actually, let me just brief. Okay, tell him. How dare he call him an idiot? Parinto. Intavama Fandu. Oh, please maintain discipline. Please take your seats. Please maintain discipline. Please. Oh, please maintain. Please calm them down. Please. Take your seats. Yes, continue, please. Chung says that if that dumb alien talks to him, If he threatens him further, he's gonna put him in his transforming machine. that guy's gonna transfer you into a. He's gonna put you into a. You don't understand English, please. Sorry. La Paranto di Miliani. Intaku, Vasime, Vistevo. What is that gonna do? You jackass, you know what that's gonna do? Listen, man, you don't talk to me in this tone of voice. You do that again, I'll blow your buns off. How dare you threaten me like that, huh? You are nothing in front of me. Understand? I have the experience of 84 years, and you're just like a pussy in front of a wolf. What the? Don't fight, please. What is happening? I won't leave him. Fandu. You yourself are fighting. You should calm them down. And you yourself start fighting. Please, don't do it next time. Okay, yes, Mr. Hitchcock, you were saying something about that transforming machine. You know what that transforming machine is gonna do? That transforming machine is gonna convert him into a ball. I don't know. I'm sorry. Samuro. Fandu. Oh, Samuro. No. Now, before the things go bad, let us go towards reconciliation. So, Mr. Dick Johnson, will you please ask Mr. Systematic Chung to return the females of Mr. Hog of Dogbuck so that I'm able to convince him to return his clouds back? Please. Well, you see, he isn't really losing. Oh, you Dick. I'm not asking you. I want you to ask Mr. Systematic Chung to return his females. Please ask him. Parantasialo la boobs. Karanta Wama, Askivoma Kunta. Samtabana, Intevama Hamama. Vasime, Intevo Kunta, Garara Parata.
Rastime Lu, Rastime Kunta. Interrogant. What is this? Well, he's using the one. Okay, Mr. Hitchcock. Now you please ask Mr. Hogger Dogbird to return the clouds so that shrewd systematic Chung return his females in return. He says, if we return the clouds, there won't be any ting tung rainfall, and therefore there won't be any food. And Planet X is not unethical enough to steal food from Bongun 13 forever. Therefore, Hugbug Dogbug has decided not to return the clouds. As far as the population is concerned, he is really very much concerned about the severe decline in population. Severe decline in population? Yeah. What? Can you explain it? Can you give population figures of Planet X? Don't cry. It's very depressing, you see. You want to hear that? Yes. Previously it was 300 billion and now it has been reduced to 3 only. From 300 billion to 3 only. Yeah. See what? Wanta Makunta. Anti-war Kunta. Now what he wants to do? Mr. Chung has sympathies for Mr. Yeah. Kunta. Wasta. Roma. Rasta. What's this one again? Asky warm, asky wet. One down, 2 to go. Insult and humiliate people less fortunate than them. But one should keep in mind that if you dig someone's grave, you land in it yourselves. They learn their lesson when a beggar curses them, and at exactly midnight, their souls interchange. Shiza Mohsin, Zaryab Malik, Shoaib Sanwal, Sonia Sattar, Noreen Shahid, Ashwin Aziz, Ubaid Siddiqui, and Shoaib Majid present It Happened One Night. Maybe the beggar outside. He's selling something, I guess. What? He's selling something. What thing? Can't you see I'm busy right now? Just tell to get lost. Begum Saab, Any piece of merchandise? This is not stolen. Begum Saab, please buy this. It's a good luck thing, this. Please buy it. Good luck. You are the one who needs it. Now will you get lost? And I get him out, he's smelling like a camel. Begum Saab, please. I need this. I need money, Begum Saab, please. Inayat? What is going on here? Can I have some peace around this place? Who is this? I don't know, Bunny. Look at him. Saab, please. Help me, please. I'm very poor, Saab. I don't need it, you pesky little beggar. Get out of my place. So this is how you treat the first. I curse you. You shall suffer for this. Get out if you know what's good for you. That's because you got money. You think you can treat poor people like this? Bunny, he's scared. I curse you. I curse you. I'll curse you that in the tonight at midnight, you suffer so bad that you remember it for the rest of your life. Huh? What a character, huh? Do you think we should call the police? Come on. I didn't know you were such a chicken plug, huh? I'm not. And why do I ever bother? No, here they come. Here, Sophia, meet my fifth wife. Hi, Sophia. How are you? Fine. You're looking lovely. I love your dress is so gorgeous. Ask my wallet about it. Shut up, Bunny. You know how crazy I am about Paris originals. But honey, why are you looking like a rag? She is? A rag? Excuse me, I designed this myself, okay? Design? This is no design, honey. This is a joke. Hi. Hello. How are you? So glad you could make it, boy. We all know how you love to eat, huh? He doesn't eat. He hogs. Hello. Hello. Hi, how are you? Hi. Bunny, shut. Honey. Hi, how are you? Hi, how are you, huh? Know something about this guy, Dolly? Uh-huh. His face resembles like a saint, huh? Saint Bernard.
You know, at school we used to call his girl a treasure. Too bad he dug her up. Enjoy yourself, huh? Hello. I'm so glad you could make Hello. it. So, boy, how's your business going down, huh? Faster than you anticipated? You know, I've got a very good suggestion for you. What was the suggestion? Yes. Why don't you sue your brain for non-support? I can give you a good lawyer. So, okay. So, their house party going on? Superb, just superb. Just need it. I did. Don't get too much of smoke around here. Would you please help me out, you kind gentleman? Yeah, thank you, thank you. Hey, are you okay? Ouch! Don't you know how to treat a lady? You're very unpolished, huh? Oh. What happened? Fainted. So, boy, Oh, must be with all this makeup of yours. Yeah? Really? I thought you make a fuss about it. But I'm no silly pansy. Just get lost. I better go check out the guys. Hi, guys. How are you today? Did you check out those lovely chicks? I did you look at that one? She's really cool, man. Absolutely cool. no, I'm sorry, I didn't. Okay. What? What's your problem? I'm fine. What about you? So, guys, how have you been? Hi. Hello. How are you? The new... No, not really. You did? It's in news, you know. Yeah, if you finish with your insulting remarks, I think I better go. Come on, you're looking like a havoc. Look at yourself. Hey, man, you need some polish. Hi. No, she never showed up. I wonder why, but how very rude. You asked my wife out. I'm gonna have a word with her. Yes, I did, but don't be too harsh on her. I can understand. Bye. Going? Yeah. Really? Bye. Stick around, I got something to tell you later. Alright, but he kissed me. He kissed you? Yeah. Stay away from this guy, man. Stay away from this guy. So, yeah, you know what? I think we better leave. Yeah, better go. I think we better leave, man. There's a new show going on there, What? We'd like to get... I think we better go, man. Girls, let's go. let's get out of here before something else happens. Hey, bye. Bye, buddy. Bye. Bye. No, bye. Thanks a lot. Bye. That's weird. Nobody kissed me. Am I losing my touch?
तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। बस आँखों की आँखों में इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। बड़ा
Rahat Rauf. देखो यारो कौमी ने चढ़ाई रमणिया ने देखो यारो कौमी ने चढ़ाई जोड़ के डब्बा डब्बा के एक लंबी रेल बनाई परे हो जो सोनिए सज रेल गड्डी आई 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 हमारे आजो सारे हमारे आजो सारे ऐसे शमते होनी साड़ी कुड़ियां नाल लड़ाई परे हो जा सोनिए साड़ी रेल गड्डी आई 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 अरे हो जा गोरिए साडी रेल गड्डी आई अरे हो जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई अरे हो जा गोरिए साडी रेल गड्डी आई अरे हो जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई अरे हो जा गोरिए साडी रेल गड्डी आई अरे हो जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई अरे हो जा गोरिए Everybody needs some time on the road. Sometimes I need some time
Do you need some time on your own? Everybody needs some time on their own. Sometimes I need some time on my own. When you feel the light, then shadows still remain. Never mind the darkness, we still can find a way. 'Cause nothing lasts forever, even cold summer and the rain. Now I would like to introduce you a friend of mine from Frontier Province. He's totally disheartened from his life, and he really wants to do something worthwhile while he's alive. Our conversation will be in Urdu, as Khan Sahib does not understand English. Khan Sahib, तशरीफ लाइए, आइए, आइए सर. बैठे. इधर बैठेगा. आइए खान साहब. अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र. और खैरियत है बिल्कुल. बस अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी. खान साहब अच्छा, क्या तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? नहीं नहीं खान साहब, नाराज ना हो. इंटरव्यू खाली में एक थोड़ा सा चले छोड़े. नहीं नहीं खान साहब. अच्छा आप ये बताएं, आप कौन से गांव के रहने वाले खान साहब? तुमको ऐसे क्या? खान साहब इंटरव्यू आपको इतना जिधर भी हम रहने वाले वहाँ तुम जैसा आदमी नहीं होता. खान साहब आप नाराज होते हैं खान साहब. अच्छा आप ये बताएं, ये थोड़ा करीब करें. हाँ बिल्कुल करीब करेगा खान साहब. हाँ बोलेगा बस. ये बताएं, आप अपनी जिंदगी से बेजार क्यों हैं? वो असल में मसला ये है कि तुमको सच्ची बात बताएगा. हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू है, बिल्कुल सच्ची बात. अच्छा ठीक है. वो सच्ची बात ये है कि जिंदगी हमसे बेजार है. अरे तो हम सोचता है कि वो शेर है, हम सवा शेर है, हम उससे भी बेजार. अच्छा और खान साहब, मेरे ख्याल में गालिबन मैंने आपको कुछ अर्से पहले टेलीविजन स्टेशन के बाहर देखा था. देखा था तुम? हाँ देखा था? बिल्कुल देखा. वो क्या सिलसिला था, कुछ बताएंगे आप? वो यार असल में ये आपस की बात है, मोहब्बत की बात है. हाँ. तीसरे बंदे को नहीं पता चलता. नहीं नहीं बिल्कुल कोई और नहीं सुनेगा. नहीं, कोई नहीं सुन रहा. वो ठीक है. वो असल में हम गया था नौकरी वोकरी के लिए. अच्छा अच्छा, नौकरी. तो वहाँ हमने बोला कि कोई नौकरी वोकरी दो. उन्होंने बोला नहीं है नौकरी. मैंने बोला नौकरी तुम तो जगह हम करेगा. अच्छा ठीक. तब भी वो नहीं माना, बोलते तुम पढ़ा लिखा नहीं है. हाँ हाँ. मैंने बोला ठीक है, ये तो अल्लाह की तरफ से तो हम नहीं पढ़ा, ठीक है. फिर भी वो नहीं मान रहा था. फिर उसके बाद मैंने बोला कि वो जो टेलीविजन नशरियात में वो खराबी नहीं आती, वो मैंने बोला वो मैं निकालेगा. हाँ हाँ. खान साहब ये क्या बोल रहा था? ये बाद में बताएगा, अभी नहीं. खान साहब कुछ अगर पता चले खान साहब. नस्वार खाएगा? नहीं नहीं खान साहब, नस्वार नहीं. और कुछ नहीं खाओ, ये जन्नत का मेवा है. हमको पता है मेवा है, हम नहीं खाएगा. वो खाओ वरना गोले खाओ अभी तुम. नहीं नहीं खाएगा बिल्कुल. थोड़ा सा. खान साहब शॉल बड़ा अच्छा आपका. वही शुक्रिया. ये हाँ, बहुत अच्छा है ना. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. हाँ. अच्छा और ये बताएं, चले ये नौकरी तो हुआ, हाँ.
ये बोलेगा। इंटरव्यू। वो ठीक है, वो अच्छा। मसला नहीं है, बोल आगे बोल। अच्छा, तो आपने और किस किस्म का नौकरी किया, कुछ बताएंगे? नौकरी का मत पूछो यार। नहीं नौकरी खान का साहब, थोड़ा बता दें। आप इतना दूर से आए हैं कि टेलीविजन में, नेटवर्क में हो रहा है। वो यार असल में मैंने नौकरी किया था सोने की दुकान पे। अच्छा, सोना है साहब? बोलता है हिलो। अच्छा, हमने बोला नहीं रहेगा, खोचा तुम कर लो जो करना, नहीं रहेगा। बदतमीजी करते। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? दूसरा भी मसला एक और हो गया। वो तुम जानते हम कितना खाते, तवज्जा करते हैं, मेहमान हम तो बहुत तो हमारे गांव से आया, मेजबान आया, हमने बहुत खुश हुआ, उसका बच्चा साथ था, हम बहुत खुश हुए। हमने वो 2-4 सेट पड़ा हुआ था सामने, हमने एक बच्चे को दे दिया सेट। अच्छा, वो खर्चा इतना गर्म हो गया, उसने हमको इस बात पे निकाल दिया। नहीं खान साहब, इसमें दिल बर्दाश्त होने की कोई बात नहीं है। चले आगे बताएं, और क्या आपने फिर क्या किया उसके बाद? उसके बाद मेरा जिंदगी का मकसद नहीं था ना। नहीं, जिंदगी का मकसद नहीं था, मैंने ग्रेनेड में दाखिला लिया। अच्छा, वो नया जो पढ़ाई का कुछ चक्कर है। मैंने सोचा कुछ पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ बनेगा। आप पढ़ लिख लेंगे वहाँ पे? देखो अब आप आगे ऊंचाई किया। अच्छा, हम भी देखें। देख। अच्छा, ग्रेनेड में आके आपने अपने आप में क्या फर्क महसूस किया? कुछ फर्क हुआ? यार बड़ा मसला है यहाँ का, खुदा का कसम बहुत मसला है। क्या मसला हो गया? सबसे अब देखो, तुम हम पहली चीज पता है, तुम सच्ची बात बताएगा। 3 चीजें हम बिल्कुल भूल गए। अच्छा, क्या? खाना भूल गया, अच्छा, सोना भूल गया, ओह, वो तीसरी बात तारीख को जाना भूल गया। हाँ साहब, ये तो अच्छा। चले खैर, सवाल जवाब तो होते रहेंगे। बहुत अच्छा, आप तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह। कुछ आपको गाने से कुछ लगाओ कुछ? यार ये गाना वाले का मत पूछो। नहीं, आप गाएंगे कुछ पसंद? मेरे को गाना अच्छा नहीं पूछो। नहीं यार, देखिए अब आप आए। हाँ बिल्कुल गाओ, खड़ा होके गाएगा। मर्जी आपका खान साहब, खड़ा होके गाओ, ये माइक है, आप लोग गाओ। ये अब सुनेगा सबके सामने गाएगा। हाँ बिल्कुल, सबके कोलार चपेट और से कम तोर माला रौड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रसलोर माला रौड़ा टीट 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 कानों के लिए बाली, होठों के लिए लाली, मेरे वास्ते सनम ना आना हाथ खाली वरना पड़ेगी थाली। टीट 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 टीट। वालेकुम शुक्रिया, वालेकुम। आप बहुत अच्छा गाते हैं खान साहब। शुक्रिया यार। कुछ और आपका कुछ लगाओगे क्या? फिल्म देखते हैं बहुत? फिल्म तो देखते, कौन नहीं देखता। अच्छा, हमने सुना था आप, मेरे ख्याल में कोई वीसीआर लेने का चक्कर था। तुमको किसने बताया? नहीं, वो दोस्त यार बताते हैं कि आप वीसीआर ले रहे थे। हाँ यार, असल में वीसीआर तो खरीदने का है मुझे, और थोड़ा पैसे की भी किल्लत है मेरे पास। ओहो, मैं सोच रहा है अपना टेलीविजन नहीं है वो उसको बेच कर वीसीआर खरीद। अरे खान साहब, चले अब क्या कहूँ मैं। अच्छा, आप ये हमारे नाजरीन बैठे हैं, ये डायरेक्ट टेलीविजन में जा रहे हैं। हाँ जाएगा मसला नहीं। हाँ, मतलब आप कुछ नाजरीन से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। यार जिंदगी को तो मैंने बहुत करीब से देखा है। अच्छा, हाँ वाकई, वो जिंदगी खान ही हमारे घर के करीब ही रहता है, वो सामने गली में रहता है। अरे हाँ, मैं जानता हूँ जिंदगी खान। तुम जानते? हाँ, किस तरह? वो गालिबन आपका कुछ टांग में शायद फ्रैक्चर हो गया था, अस्पताल में आपके साथ था। हाँ यार, तुम जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या वही जिंदगी खान है ना? हाँ वो जिंदगी वो खान। क्या हुआ, क्या था? यार उसका भी देखो, हम बोलते हैं हम जिंदगी से बेजार है। अच्छा, वो असल में सिलसिला ये था कि हम जा रहा था पैराट्रूपिंग। हाँ, पैराट्रूपर से जम मारते हैं। हाँ वो पैराट्रूपिंग कर रहा था, अब ज्यादा बीच में नहीं बोला करो। पैराट्रूपिंग कर रहा था आराम से, वो खुद उसके अंदर वो छतरी नहीं होता, छतरी वो लगाते पीछे। हाँ, मैंने वो लगाया और आराम से छलांग मारा। अच्छा, आराम से नीचे आ रहा था, वो छतरी भी खोला, आराम से खोल, आराम से वो मजा आ रहा था। वो अचानक जिंदगी खान सामने से वो गुजर, मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने बोला खोचा तुम रेस लगाते, वो भी हवा में। मैंने भी अपना खोल दिया। अरे खान साहब, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अक्लमंद है खान साहब। लेकिन आप पीछे नहीं रहते किसी चीज में, इसमें भी आगे। हाँ, इसमें भी हम बोलते क्यों रेस लगाते। खान साहब, आपका जिंदगी तो वाकई चले छोड़। अच्छा बोलेगा, आगे बोलेगा। एक और बात बताएं, बुरा ना माने। बोलेगा। ये जिन लोगों के नाम के आगे खान होता है, क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? ये क्या बात करते हैं? नहीं मतलब आप बुरा क्या बात किया तुमने? बुरा माना तो वो जवाब। खोचा तुम जंगीर खान को देखो, हाँ, वो डॉक्टर कदीर खान को देखो, बिल्कुल सही। वो इमरान खान को देखो, वो खोच आखिर में सदर पाकिस्तान को देखो। अरे मान गया मानते हैं बात? बिल्कुल, ये बात तो आपका मान। हर चीज में खान का सबसे बड़ा हाथ होता है, दुनिया पे पाकिस्तान। बिल्कुल खान, मानते? ये मानते, बिल्कुल मानते। ये बात मानो तुम। चलो अच्छा, वापस ग्रेनेड की तरफ आ जाओ। हाँ वापस आओ, रिवाइंड करो, कोई मसला नहीं। अच्छा,
ये बताएं, ग्रेनेज में आपने क्या क्या देखा है? कुछ खास चीज, क्योंकि आप इतना ग्रेनेज में दाखिला ले लिया? क्या यार कोच, मैंने अजीब चीज देखा ग्रेनेज में। क्या अजीब चीज वो देखी? पहला तो सियासत देखा। ओ अच्छा। फिर उसके बाद फटी हुई पेंटें देखी। अरे फिर उसके बाद वो जिससे हम गाड़ी साफ नहीं करते वो कपड़ा सर पे लगा कर आते हैं। ये क्या होता? बुंदे। वो फिर हमने कानों में लड़के के बुंदा देखा। अरे लड़कों के कानों में? ये क्या? ये तो अजीब बात है। फिर लंबे बाल देखे लड़कों के? हाँ। अरे फिर सबसे अजीब चीज क्या देखी पता है? वो खोचा जिसने अंग्रेज ने वो टोपी धूप के लिए बनाया था, इस खोचा कौम ने उसको भी उल्टा कर दिया। अरे खान साहब, वाह भाई, आपने तो यार ये तो कुछ अजीब जगह है। चलो खैर, हाँ बोलेगा। इससे ये बताएं कि आप ग्रेनेज में गए, इतना चीज देखा, आपको क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क नहीं पड़ा? तुम कैसी बात करते थे? नहीं आराम से खान साहब, वो टेलीविजन में वो खोचा सबसे बड़ा हमको ये फर्क पड़ा कि ये नहीं पता चलता रिजवान कौन है और रिजवाना कौन है। कुछ कई दफे तो वो जा रहा था, हमने बोला रिजवाना बाजी सलाम वालेकुम, वो पीछे मुड़ के देखा, मैं डर गया। मैंने बोला ये क्या? मैंने बोला खान साहब माफी चाहता हूँ, आप चाहिए माफी, सलाम वालेकुम, खुदा से। अच्छा अच्छा, इस तरह का मसला होता है। तो खान साहब ये तो बड़ा अजीब आपका जिंदगी का है। अजीब जिंदगी तुम देखो। ग्रेनेज में क्या होगा आपका? अल्लाह जानता है क्या होगा, मैं खुद भी नहीं जानता क्या होगा। अच्छा अच्छा खान साहब, ये अब इसको तो छोड़ दें, अब ये तो हो गया ना एक दफा। अच्छा, इसके बारे में बड़े बड़े शायरों ने शेर लिखा है। नहीं नहीं, क्या शेर लिखे? इसके बारे में क्या शेर? वो कुछ शेर लिख, मैं सुनाएगा? हाँ चलो सुनेगा। सुनेगा, तुम बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है। हजारों साल रोता है नरगिस अपने बेनोरे पे। रोती है रोती है, वो एक ही बात है, रोना मतलब है ना हमारा। हाँ, तो बीच में नहीं बोलेगा, तुमको मना किया था मैंने। रो। हजारों साल रोती है नरगिस अपने बेनोरे पे, बड़े मुश्किल से होता है चमन में नसवार पैदा। अरे खान साहब, कुछ डबल और नहीं करता। वो आप हमारे पास टाइम नहीं पता। नहीं खान साहब, थोड़ा सा एक आखिर और। बस कर, तुम बहुत अभी बहुत हो गया। यार खान साहब चलो चलते हैं। ठीक है।
गोरिया फिर जरा सोच के मेरी भी थोड़ी मजबूरियां हो आज तुझको देख कर मैं रो गया दिल तेरी राह में फिर गया मेरा ये कैसा पुराना नहीं क्या क्या तेरे प्यार का दीवाना नहीं हो जा मगर कुछ मैं कर ना सका हो तुझको देखकर मैं चारों तरफ अब अंधेरी है जाने कहाँ अब मौसम है ओ जहाँ मगर कुछ न कह मैं सका दिया फिर जरा सोच के मेरी भी थोड़ी मजबूरी Back to the Future, our next skit is a comedy which takes you back to Mohabbatabad, where relationships have not stood the test of time. Shiza Mohsin, Zaryab Malik, Noreen Shahid, Mateen Asghar, Ali Hassan Siddiqui, Shoaib Majid, and Shoaib Samwal present Back to the Future. Concerned about Chodu, I'm more concerned about my life. Look, big shots. Don't you understand? Mommy, I wanna go home. Listen, calm down. All we have to do is to go in, take the interview, and then chutti, and you go. Listen, the first crack of the lightning, the first cry of the owl, and the first cry of the wolf, they come to life. You're scaring me even more. And then we take the interview. That's it. Look, that is it. You're talking about taking interviews of dead people. You crazy? Look, I can see something coming to life. I can see. Look, stick with me. There are people here. Look. Shanja, where were you all these days? I was looking for you. तुम किधर चले गए? मैं और तुम और मैं. हम दोनों तो साथ ही थे ना, लेकिन क्या हो गया? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, अगर तुम होते तो कैसा होता? लेकिन तुम नहीं थे. तुम कहाँ थे आज? कहाँ? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते थे. तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता. मैं भी इस तन्हाई से तंग आ गया हूँ हीर. लेकिन I was ढूंढing you for so long. Excuse me, I am from CNN. ये CNN क्या है? आपको CNN का नहीं पता? छोड़ू न्यूज़ नेटवर्क. You don't know about that? Ask them. Look, we want to take your interview. Please help us. You please help. Please tell us something about what happened to you. My boss, you hit my boss. यार मैं पूछूं? हीर किथे रख के पोलियो मेरी खीर. हीर किधीर किथे धीर किधीर केड़ी
मन दसो तो याद तक कराओ बादशाह। अजीब मुसीबत है, तुमको तो कुछ याद ही नहीं है। तुम्हारा सर क्या जमीन पे लग गया था जो भूल गए सब। बहुत बहुत मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे बताओ कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो गई? हम तो खुश थे ना, तो फिर क्यों हुआ ऐसे? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तुमने सिर्फ लड्डू खाया, ना सिर्फ लड्डू खाया, सारा टोकरी रख कर दी। तो एक तो थोड़ी पेट भर जाता है इनका, वो तो सही है। वो भी तुमने अकेले खाया, मुझे याद भी नहीं किया हैं? केड़ी गल की थी ये तुसी? ओए तू चुप कर, जहर वाला लड्डू तो दिया था तुझे आधा, और क्या चाहिए? ओहो, देता है। तू है इसी काबिल, देख जरा, तुझे तो हीर भी नहीं आती है। हीर? ओ हीर ते मन बूढ़ी आंदी ते खलोती पई है हीर। हीर पूरी दी पूरी खलोती है, सामने वाले को पूछ लो। तुमको तो कोई ख्याल ही नहीं है। देखो जरा, सब लोग क्या सोचेंगे ना, हीर रांझा बनी। बहुत बुरी बात है, मुझे बहुत अफसोस है। हीर भाई माई वालों को पूछ लो, उन्हां नु आंदी बैटरी डाउन हो गई है। सर हमें न्यूज़ देना है। नहीं मैं नहीं देता। Oh my Romeo, 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 I have missed you so much. Where have you been? I came to rescue you, but you were asleep. Why? I was waiting for you to come and rescue me. I was coming. I climbed the ladder, but your mother took the ladder away and I fell down. It wasn't my mother, it was Marcus. I had asked him to get me some chole. You should have asked me. I would have got you some. You know my father has a shop. I didn't know that. Forget everything. When we were put here, I put you in a pot so that you could grow. Because look at me and look at you. But still, you are still like that. Why? I got a better solution. Now we can talk. Forget it. Get down. So, what have you decided with our life? Excuse me, sir, I am from CNN. We want to ask you what happened. You people were lovers. What happened? What went wrong? It's none of your business. Look at that cute guy over there. Which cute guy? That cute guy. Which cute guy? That one. He's so cute. मेरी बात कर रही? वो मेरी बात कर रही? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं प्यारा. कौन प्यारा? My God. Your Sony ran away with my Majnu. मैं खड़ा हूँ ग्रीनिच में 2 साल हो गए दाखिला लिए कोई आया नहीं. This is really bad. लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इस तरह लड़ते क्यों? मेरी भी सोनी सिर्फ इसी वजह से भागी थी. और मैंने पता है क्या कहा था? जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते जो. और फिर तुम लोग इस तरह लड़ते हो. तुम लोग भी इसी तरह जुदा हो जाओ. I would have sung the same हमें song. इधर इस तरह लड़के रहो. दूसरा ग्रेडिज भी नहीं है. आइडिया में दाखला तुम दे नहीं सकते. उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो क्या दाखला लेगा? मैं ला, तुझे बड़ी आती. और ऐसी है ना ना छोड़ू. जूली, मैं चर्चा तेरे वास्ते सूली. बिरयानी. So, मेरी माँ. I want to go there. What do you mean you want to go there? But he's so cute. What do you mean he's so cute? Excuse me, sexy Mali. What do you mean so cute? Too cute. और सारे हट जाओ परा हुए और रांझा आ गया मैदान में ओ जमालो. रांझा आ गया मैदान में ओ जमालो. परा हट जा तू. Ooh la la, his name is Ranger. Ranger. Oh wow. ओए तू कहाँ से आ गई रेंजर की पुत्र? जाओ तुम अपने उस टूथपिक के पास जाओ. उधर आओ. You have made Taka on my love.
Now we will fight. This is din dihade chuking. Chuking? I will fight you for her. For this thing, Yeah, for this one. you mean the very same thing? Just the very same thing. You will fight me? Yeah. You want a dangal? Dangal. On Mangal? No, today is Thursday. Okay, we'll play it today. आज हाफ डे है जी आज हाफ डे आधी कुश्ती करना आओ मैं घर चलाऊंगा दी बात ओके गांधी बादशाह Yes. लड़ाई करनी Yeah, लड़ाई करनी. मैं रेफरी बन जाऊँ बन जाओ. ताकि मेरे आओ भाई आओ ओके मैं Ladies and gentlemen, in this green and red corner, 260 pounds, Chapote! In this corner, 6 ounce, 200 and कुछ भी नहीं pound, पता नहीं, go me home. Now listen, you guys. इधर आओ अरे तुम रिंग में नहीं आ सकते चलो इधर आओ देखो तुम लोगों ने जाना कुछ भी नहीं करना अरे इसकी रोटी नहीं खींचना Hey, you in the pantaloon and shirt. मेरे पहल तो अंत पहला तू मेरी हीर दे नाल लड़. Unfair, unfair. in this corner in this red corner full red corner wait पता नहीं सकता क्या नाम आपका खीर ओए अब मैं तेनू पहला भी आख्या ओ माई वाला तू ते कहना पे हीर नू ते खीर खा मैं कह रहा तू ते कहना पे ऐसे ही है देखो सेटिंग होती हुई ओए कॉन्फिडेंशियल okay and no hitting below the belt please give me an R yay ranger एक मिनट ये क्या हुआ ये खड़े में कुश्ती हो रही है रिंग बना दिया रहने तो सोच लो करने तो या बोल ओए मच कटू देखा कैसी हवा चली ये कोयटा भी है ना ना और अच्छा पिट रहा वाह कराटे देवना चिडिंग उसका वेट देखो मेरा वेट देखो प्लीज कार्ट इज ऑन यू सी नहीं I will have rematch. I want a rematch right now. Okay. Listen to me, you in Pataloon. I know. Not a rematch. You are wearing chatter. You see a cut piece. जब कट पीस है तो थान कैसा होगा? मौसा. मतलब जाए आप. मैं ना तुमको. आपको भी कुछ कहना है? धोती और पतलून का ख्याल है राजा आके मैदान में राजा आके मैदान में और पढ़ लो रू मैं तो समझा दे देंगे ये रिंग ही है अच्छा ठीक है Yes, Ranger. चुप करो छटकी देखो ये स्क्रिप्ट में नहीं था लेकिन भूल गई तो क्या था Ranger. कोई बात नहीं My lord, she doesn't know Punjabi. Oh yes, what? मैं इंटरप्रेट करता हूँ जी उन बोल दे मैं उन ऐसा धक्का मारूंगी फिर she will धक्का you What? she will push you you will do something बाबा रेसलिंग का की होया okay क्यों नहीं है
Okay, one again. धोती बांध ली? Very good. Okay, 1, 2, stand up. Okay, 1, 2, 3. ओए रांझे मैं तेरे साथ हूँ तू फिक्र नहीं कर. Yes, Ranger. Look, listen. ठहरो. देखो हमारे इंटरव्यू का क्या हुआ? जो घंटा बजने वाला है. बस करो यार, इंटरव्यू वाले ने तो यार get out. Yes, Ranger. Dum. यार हमारे इंटरव्यू का क्या होगा? अरे अब छोड़ेंगे.
गोरी रंग का जमाना कभी होगा न पुराना गोरी डरे तो रंग गोरा है रंग गोरा है गोरी रंग का जमाना कभी होगा न पुराना गोरी डरे तो रंग गोरा है मेरा तो रंग गोरा है सावला सावला रंग की सूरत वाला है जिसे देखो मोरी पीछे जलाता है सावला सावला रंग की सूरत वाला है जिसे देखो मोरी पीछे जलाता है गोरी रंग का नजारा लगे सबको ही प्यारा
ये है उधर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है पूरे रंग गंगा मन जोगी होकर अपना गोरी डर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है हाय तेरा तो रंग गोरा है गोरी गोरी बाहों का मजा ही कुछ और है हरे नीली नीली आंखों का नशा ही कुछ और है गोरी गोरी बाहों का मजा ही कुछ और है नीली नीली आंखों का नशा ही कुछ और है गोरे रंग का नजारा लगे सबको ही जरा जरा कर दो इशारा गोरी ये उधर तुझे किसका है रंग गोरा है पूरे रंग का जमाना कभी होगा ना पूरा पूरी डर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है तेरा तो रंग गोरा है सोई दुई आंखों का तुम्हारे याद रखना मीठी मीठी बातों की बाहर याद रखना सोई दुई आंखों का तुम्हारे याद रखना मीठी मीठी बातों की बाहर याद रखना और रंग का नजर लगे सबको ही तरह तरह कर दो इशारे गोरिये उधर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है रंग का जमाना कभी होगा न पूरा तेरा तो रंग गोरा
So now we have a traditional award ceremony. Award ceremony 92. Greenwich is full of great people, and we are here to encourage some of them. Before I announce the awards, I would like to call a VIP here to give away the award. Actually, traditionally, Mr. Michael Gledhill used to be here to give the awards, but unfortunately, he is not around. So instead, we are calling his son, Christopher Gledhill, to give away the awards. Please. Actually, he has been given some prescribed questions by his father, which he is going to ask some audience also. Christopher, are you ready? Yeah, I'm ready, but the thing is this, that my father couldn't come and forget it. Oh, doesn't matter. Don't be so depressed. Yes, this time the competition for awards was very tough, and there were so many nominees for each award that the judges had really a very torrid time. But anyway, the envelopes containing the names of winners are with us, and so let's see who are those lucky ones. Actually, we were supposed to give the award first to the students and then also to some of our teachers, but since one of our teachers is leaving very early and he's in very urgency, so we will give first award to one of our teachers and then we'll proceed with our routine student awards. Well, we have very nice teachers here, and some of them are very beautiful, very smart, very handsome, very intelligent, and all in all, but they are still bachelor. Although many proposals that came for them, but no one can match their greatness. Those teachers is with us here, and we are going to give him an award. I would like us to call the name of the teacher. We would like to invite Mr. Basit Afzal. And here the award is the addresses of all the marriage bureaus. Sir, I didn't have anything to do with this. It's all there, I guess. So, wish you good luck. You want to say something? Are you sure? अगर जरियाब में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना होता तो मैं बैचलर ना होता. Anyway, okay, students, you seem to be enjoying this, but wait, you may be the one coming next. Anyway, the first award we have got is the Baji Award. The Baji Award, and this will be given to the most respected Baji of all the Greenwich boys. Right? There was very tough competition for this award, and there were some nominees. Athar, please take the names of the contenders for this award. The nominees are
She's our most. And Farooq Amin. Also. So let's see who is the lucky winner of these four. Before you decide on the winning Farooq, man. No way. No Farooq. Okay. Let's see the decision first. The winner is Saida Bandukwala. Welcome, Saida. We have an award, a box full of Rakis. You may need them now. Cool, very cool. Okay. And now we have Bachelor Forever. The nominee for this Nun Award were. The nominees are Adnan Bukhari, Suhail Amin, and Amir Abdul Rahman. Now guess who can be the nun? The winner is Suhail Amin. So good news, Greenwich girls. Suhail has finally decided not to marry ever. And the award is a cross. I really like this dude, man. I really like him. Although, you know, you're a bit different. They are supposed to be grown up, but some people like, no names. Anyway, we have got Grow Up Award, and the nominees for this Grow Up Award were. Nominees are Fawzia Hassan, Noreen Bartla, Shoaib Majid, Dina Star Khalid. And the winner is Dina Star. And the award is the Bottle Feeder. And now we have two very special awards, the two Excellence Awards, one each for a boy and a girl. Actually, these awards have been suggested by the executive committee, and they are very special, and because they are excellence in nature. And these are given to the students who are perfect from every angle, who are complete from every aspect. Well, first let us see who were the nominees from boys for this award. The nominees are Mr. Ayaz Rafiq, Mr. Ayaz Rafiq, and Mr. Ayaz Rafiq. Award. He also came in the last award ceremony, and we couldn't find any suitable award that time also. This time also we tried. UNO even said for 9 months, but still they couldn't find any award for you. We are really sorry. Actually, you are so complete. You have everything. So there's nothing left to be given to you. Anyway, try your luck next time. Wow. Actually, Ayaz was very lucky because he had no competitor. But this is not the case in girls. Here the competition is tough, and the nominees of this Excellence Award among girls were. Ladies and gentlemen, girls and boys. Arfeen Habib, Natasha Nazim, Iram Khokhar, Nausheen Zaki, and Ashfeen Aziz. Let's see who gets the Excellence Award. The winner is Nausheen. Awards are meant for those people who are so intelligent and complete from every aspect. So it is very hard to get any award for them. And so it happened with Ayaz, and I'm afraid we couldn't find any award for you two. Maybe Christopher wants to say something in this regard? Yeah, I recommend that you sit down with Ayaz and you discuss your problems and everything. Sit down so you know. I know Ayaz and you have been in the first semester. Hey, can I finish? Good luck next time. Can I finish? No, please, Christopher. 5 more minutes. It's not bad. Okay, thank you. Some students are always seen here attached with others. So we have a special award for this too. Last time, Farooq Amin won this luckily. We have some special awards for whom there were no contenders. These awards are for very special people. The first in this line is, the first special award is for someone who is famous for her fast talking, aggressiveness, dominating, spearheading, and influential personality. So who that can be? Simon! Look around. She. Whoa. Due to her influential personality and strong and dominating figure,
she has been given the award of Chief of Army Staff for Future. The first lady to be Chief of the Army Staff. Please give her a big hand. Your country needs women like this. Another special award is for, so we thought we should give an award to Nusrat Fateh Ali Khan as well. So this award is for Nusrat Fateh Ali Khan. But I think he's not here. Anyway, we have got Nusrat Fateh Ali Khan's Baji here. So we call Nusrat Fateh Ali Khan's Baji to collect his award. Nadeem Dar! Now we have the last special award, and that is the appearance award. This is going the special request from the executive committee, and Mr. Christopher was very keen to receive this person. We welcome Zafar Allah. Don't talk to you. Zafar, don't mind. I love this guy. He's great. No wonder? Yeah, you're right. He's great. First time I came into this, my father said, "This is the guy you're gonna have to follow." And I'm trying. I'm wearing these pants. I'm wearing them. I love this guy. There is no award. There is no award from, because what can you give a guy who's perfect? That's it. And we just hope that he can give some zakat. Zakat. That's the right word. Yeah, I hear his company doesn't give zakat. And bas, Zafar, I love you, man. Thank you. Come on. Famous, very popular teacher in the whole Greenwich, and we all really love him. And he is Mr. Ehsan Durrani. Well, he used to give a lot of case studies to students, and he said that he is going short of those cases. But don't worry, sir, we have got fresh cases from Canada. The case studies. Before you go, I just want to say that, I'm exempted from your classes. I took Hell 101 in England. It's okay. Thank you, ladies and gentlemen. Congratulations to all the award winners, and good luck to all the rest next time. Thank you. Management of Greenwich Institute, the members of the executive committee, the students organizing committee, and all those people who directly or indirectly contributed to the success of this program. Thank you. Even though our program has finished, after please come on the stage. Your photograph is being taken now. And I will SB folks who request to gather near the stage. Okay, go on the stage. SB4 students. All SB4, the 6th semester students. SB4 students. All you people who are eating your dinner, is it the SB4 students?